Okay. So we are starting the type 2. Type 2 infinite capacitor network. Okay. So whenever आपको normal series and parallel is there, normal method से करने का. नहीं तो you have to go for the type 1. Then if not, some other types में जाने वाला. But इसको तो identify कर सकते हैं. Infinite network will be given to you. Suppose example is a circuit. एक capacitor है. Like 1 2 1 2 1 2 so on to infinity तक. I want to find the C equivalent between the points A and B. A and B का between points में we have to find C equivalent. This is infinite network का. Infinite network में always you will get a repeating unit. Repeating unit will be there. Okay. So इस type of problems को कैसे solve करेंगे we will see. Draw कर लो पहले. So 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay. So in this type of problem में let the equivalent capacitance of infinite network is X मान लो. Always total equivalent capacitance is X. Okay. So now क्या करेंगे? एक repeating unit को छोड़ दूंगा. एक repeating unit को छोड़ूंगा. Can you tell me what is the equivalent capacitance of other network? Total equivalent capacitance is X. उसमें से एक repeating unit को I will leave. Remaining equivalent capacitance कितना होगा? One repeating unit को I am leaving. Remaining units का कितना होगा? Equivalent capacitance. X only. Why? Because it's infinity, right? Good. So, Very good. So infinite network is like ocean. ओशन में से एक छोटा सा पानी बकेट का पानी निकाल दे तो भी कुछ नहीं होगा. ओके. सो रिमेनिंग यूनिट का भी इक्वल कैपेसिटेंस एक्स. सो मैं क्या करूंगा, ये सभी को मिलके, ये तो सेम है, वन रिपीटिंग यूनिट को ऑलवेज छोड़ने का, रिमेनिंग यूनिट को आई एम रिप्लेस विथ एक्स. इज एक्स. और देखो सर्क्यूट बिकेम स्मॉलर. नाउ फाइंड सी इक्विवेलेंट फॉर दिस वन. दिस टू आर इन सीरीज है पैरेलल. व्हेन आई पास ए चार्ज बोथ आर इन सीरीज. So series का फॉर्मूला वाला है ना, C1 C2 by C1 plus C2. So 2x by x plus 2 and resultant one is parallel with this one. So plus 1 is equal to C equivalent. Right? ये दोनों series है, resultant one is parallel. Now we know already C equivalent is nothing but x only. So x is equal to 2x plus x plus 2 by x plus 2. So cross multiply क्या तो x square plus 2x is equal to 2x plus x plus 2. So 2x 2x cancel. We get a quadratic equation. X square minus x minus 2 equal 0. Now splitting middle term करो and tell the answer. X minus 2 times x plus 1. X equal how much? Either plus 2 or minus 1. So minus is not possible, right? C equivalent capacitance. So x equal to 2. अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं है तो द सी इक्वल इज 2, राइट? नो. अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आए तो क्या करेंगे? याद है फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट
b square minus 4ac by 2a. समझ याद है ना 10th class, right? Okay, so minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. चलो, now same model करो एक, draw a circuit, you tell. So 1 microfarad, 2, 1, 2, 1, 2, so on. A and B. Infinite network है, same model करके find C equivalent. So 1. No. Same method करो. The total equivalent capacitance is X. एक repeating unit को छोड़ दो. And remaining also X only. No solve. Is the answer 2? 2, no? एक repeating unit को छोड़ के remaining total is X. So circuit became like this. No solve. C equivalent. -1 plus root 13 by 2. -1 plus root 13. Root 13 by 2. Root 12 आएगा. What is the quad equation you got? X square plus x minus 3. हाँ, plus 2x minus 2, मतलब wrong किया something. देखो So- ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल का व्हाट इज सी इक्विवेलेंट? 2 plus x, and 2 plus x and 1 is series, right? So 2 plus x into 1 by 2 plus x plus 1 is 3 plus x. This is nothing but c equivalent. C equivalent is x. So cross multiply करो. 3x plus x square equal to 2 plus x. So x square plus 2x minus 2 equal to 0. No करो. Quadratic formula. ये दोनों पैरेलल है, आने के बाद रिजल्टेंट विल बी सीरीज. तो इस पे c1 c2 by c1 plus c2. So 2 plus x plus 1 is 3 plus x. स्प्लिटिंग मिल टर्म नहीं आ रहेगा, गो फॉर क्वाड्रिक फॉर्मूला.
So 0.7. नो डेसिमल नहीं है, नॉर्मल बोलो. -1 plus √3. -1 plus √3. ओके, बिकॉज दो रूट्स आएगा. -1 माइनस √3 का तो नेगेटिव होगा, बिकॉज माइनस माइनस दोनों एडिशन, राइट. सो नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल. सो -1 plus √3. √3 is 1.732, -1 is 0.7 आ रहा है ना. सो दिस इज आंसर, सी इक्वल. ओके, चलो, दिस इज सेकंड टाइप. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टाइप 3. इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन है उसका नाम है, जो डिस्कवर किया उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज. सो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, विल सी. सपोज मान लो द सर्क्यूट. ऐसा पतंग शेप में रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज में. ओके, द पोटेंशियल इधर मान लो x, दिस इज y. ओके, सो पीपल स्टार्टेड सॉल्विंग द सीरीज एंड पैरेलल सर्क्यूट का. सो करता गया. ऐसा सर्क्यूट आने के बाद रुक जाएगा. दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व, बिकॉज दिस टू आर इन नॉट इन सीरीज, दिस टू आर इन नॉट इन सीरीज. अगर बीच में नहीं है तो देन बोथ आर सीरीज, दिस आर सीरीज, देन रिजल्टेंट इज पैरेलल. ओके, सो बीच का वजह से सम प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं आ रहे, वी हैव टू स्टॉप. सो उसके लिए वो सो लोग दे डन सो मच ऑफ रिसर्च करके करके फाइनली व्हीटस्टोन हैज सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो ही एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइंड इन स्पेशल कंडीशन में वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ सर्किट बोल के. व्हाट इज द स्पेशल कंडीशन? ऑपोजिट कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करो, C1 C3 इज इक्वल टू C4 C2. अगर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब इसका सी दोनों को मल्टीप्लाई करके सम वैल्यू आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा, दोनों सेम है, तो उस टाइप ऑफ कंडीशन को वी कॉल्ड एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. In this balanced Wheatstone bridge में what is happening? The potential of x is equal to potential on y. इन दोनों को पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0. वी कैन नेग्लेक्ट दिस बीच का कैपेसिटर. सो उसके वजह से C5 इज नेग्लेक्टेड. ओनली इन दिस कंडीशन ओनली, इन दिस कंडीशन ओनली दिस इज नेग्लेक्टेड. ये नेग्लेक्ट हुआ बोले तो मीनिंग क्या है? देन वी कैन इजीली सॉल्व, राइट. सीरीज एंड पैरेलल. सो ऑलवेज आपको ऑपोजिट वाला में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड इसका भी ऑपोजिट मल्टीप्लाई करो. अगर दोनों सेम है तो ये बीच का रिमूव करो, मतलब इसका इसका टर्मिनल वाला कॉमन टर्मिनल, इसका कॉमन टर्मिनल वाला वो जो है वो निकाल दो. सम बुक्स में दे विल राइट लाइक दिस. इसी को क्या बोलेगा? C1/C4 इज इक्वल टू C1/C4 इज इक्वल टू C2/C3 ऐसा बोलेगा. ओके, बोथ आर सेम बट वी विल फॉलो दिस वन. ऑपोजिट का प्रोडक्ट किया तो दोनों इक्वल है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. उसमें C5 का नो रोल. एंड काइट शेप में रहेगा मींस नो, आपको नॉर्मल सर्क्यूट ही देगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द बैलेंस हो सकता है बोल के. आपको ऐसा आइडेंटिफाई करने का, वेन एवर यू हैव 5 or more capacitors, okay, which is directly not series, not parallel, at that time you have to check whether they comes under Wheatstone bridge or not. We have to convert that diagram in terms of patang shape mein. Then we can check whether right or wrong बोल के. Okay, we will see questions. Up it. Find the equivalent capacitance between A and B.
1 microfarad, 2 microfarad, 3, 6 microfarad, 5 microfarad. All are microfarads. I want to find C equivalent between A and B. Okay. So पहले we don't know series and parallel. So definitely we have to go for types. Types में how many other 5 are there? Okay. 5 means बीच और बीच होने के chances are there. But आपको देखने में लग रहा है, देखो multiply करो. 1 into 6 is how much? 6. 2 into 3, 6. So देखो balance है. Then we can neglect this one. No solve. Find C equivalent. Nine by four. 9 by 4 is how much decimal में? 2.25. Yes, correct. आया सब लोग को? Next. Okay. Find the equivalent capacitance between A and B. All are microfarads, X and Y. What is the equivalent capacitance between X and Y? Okay. So directly series parallel नहीं है. Okay. But wire connection problem जैसा लग रहा है ना आपको, थोड़ा wire connection problem जैसा लग रहा है. Okay. Potential distribute करो. That will be safe zone first. Potential distribute करो. So this is X. Wire में पूरा potential same. This is X. X आया. X, X, X. It will not go because stop हो गया ना capacitor. Okay. Here Y तो stop हो गया. Either which one I can put? Any variables, 2 variables we have to put, right? So here A and B लगा दो. A and A. It will not come, right? Again इधर भी potential लगाना पड़ेगा. B लगा दो. Okay, 4 potentials totally, right? Okay. But here how many capacitors are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. More than 5. More than 5 are there, right? मतलब minimum Wheatstone bridge के लिए 5 चाहिए. 5 or more. So Wheatstone bridge होने के chances है. So try to do like पतंग shape में try to convert. So what is it? X, Y, A, B. Maybe chance होने के chance है. So कुछ निकाल सकते हैं बोल के we are trying. Okay. Now tell me. Any other potential we missed? Okay, we missed one more potential. देखो इधर potential miss हो गया ना ये वाला. So serial लगा दो. A, B, C. Any other? Everything done. So we have totally 5 potential, right? So इधर क्या करेंगे? X, C, Y. Okay. आनो करो, चेक करो. अगर देखो पोटेंशियल ऐसा नहीं कि ये X से C एग्जैक्टली इधर आएगा. We can change also. Potential based on the question we got to change. Okay, not right. X and A के बीच में 1 capacitor is there. X and A के बीच में 1 capacitor. How much that is? 5 microfarads. This one done. A and B के बीच में 1 capacitor is there. How much that is? 10. These are done. Next, X and B के बीच में 1 capacitor is there. How much that is? 5. These are done. Then B and C के बीच में 1 capacitor. B and C के बीच में 1 capacitor. That is 5. These are done. A and C के बीच में 1 capacitor. That is 5. And C and Y के बीच में 1 capacitor. 5. Okay. अब देखो opposite one 25, 25. खत्म, रिलेट करो. इसका बीच का रिमूव करो. Now find C equivalent across X and Y.
5/2. 2.5 microfarads. आया सब लोग? यस, चलो। और लास्ट टाइप 4। ये पूरा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, रेजिस्टेंस का भी सेम टाइप्स रहेगा, थोड़ा और टू मोर टाइप्स भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्लेट्स का कहानी देखो। तो क्या करेंगे, 3 identical metal plates are arranged in air. So 3 plates are arranged in air, are equal distance d each other. So they both are equal distance d. The area of the plates are A. The battery EMF voltage is V connected 3 plates. Find the equivalent capacitance. Here, how many capacitors are there? This is acting one capacitor. This is also acting one capacitor. 2 capacitors. Okay. So we don't know series and parallel. Okay. Plates go. Only plates is given to you. Okay. इसमें देखो, potential difference V means this is V, this is 0. Right? देखो 0 means 0 0 0 0 0 volts. V means V V V V V. Wire में potential is same. And here also V V V V here. So how many potentials? Only 2 potentials, V and 0. Right? Now V and 0 के बीच में 1 capacitor. And 0 and V के बीच में 1 capacitor. And since identical, दोनों capacitance C है. Now find and write in terms of epsilon naught A by D वाला terms में लिखो. Because dimension is D is given, right? So area of the plates is A. How much answer? दोनों पैरेलल है ना? What is C equivalent? 2C. And C की जगह में कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का व्हाट इज C फॉर्मूला? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C इज एप्सिलॉन नॉट A by D. हाँ, A by D खत्म. इज आंसर. चलो ना देखो प्लेट्स का कैसा करना है आपको. देखो हाँ, so these are 4 plates are given, 1 2 3 4, and battery is connected, and here one conducting wire is connected like this. Okay, so he's telling find the C equivalent between 1 and 2. 1 and 2 के बीच में I want to find C equivalent. Okay, same thing, we have to distribute the potential. This is one potential, this is one 2 potential मान लो, and this is a potential नहीं मालूम है ना, a plate का potential नहीं मालूम, x ले लो, and again this also x. So all plates का potential आ गया 1 2 x x. Okay, now 3 potentials are there, so 1 x 2. Now try एक एक का. x and 1 के बीच में 1 कैपेसिटर, x and 1 के बीच में 1 कैपेसिटर C, because आइडेंटिकल है ऑल कैपेसिटेंस इज C. एंड 1 and 2 के बीच में 1 कैपेसिटर C, एंड 2 and x के बीच में 1 कैपेसिटर C. Now find distance is D, area is A. In terms of epsilon A by D बोलो.
3 epsilon naught A by 2D. 3 epsilon A by 2D, yes. आया? What you got? ये दोनों सीरीज है, आने के बाद पैरेलल है. कितना आंसर सात्विक? 3 by 2 epsilon naught A by D. यस. चलो ना करो विदाउट हेल्प. सी इसमें एडवांटेज क्या है? I'll tell you. देखो इसमें here how many capacitors are there in this question में? How many capacitors? 3 capacitors. How many plates are required? पर one capacitor में 2 plates are required. How many plates are required? बोलो. एक कैपेसिटर के लिए 2 प्लेट चाहिए. 3 कैपेसिटर के लिए 6. 6. बट देखो 4 प्लेट्स से वी आर मेकिंग द 3 कैपेसिटर. एक इंडस्ट्री में यूज होगा, कॉस्ट सेविंग में यूज होगा, बिकॉज इतना बड़ा बड़ा प्लेट से कॉस्ट रहेगा ना, वो कॉस्ट कम हो जाएगा. 4 प्लेट से ओनली वी आर मेकिंग द लाइक 3 कैपेसिटर्स. एज एडवांटेज इंडस्ट्री में यही यूज करेगा. Is it 2C by 3? So you're on mute. सी की जगह में एप्सिलॉन ए बाय डी. सो इट इज 2 epsilon naught A by D. By ए बाय 3D, राइट? सभी का है और गोटा. सो टेल मी कैपेसिटेंस का इधर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करो. दिस इज ए पोटेंशियल, ए प्लेट का, ए बी प्लेट का. इधर एक्स ले लो. इज आल्सो एक्स ओनली. सो हाउ मेनी पोटेंशियल्स यू हैव? 3 पोटेंशियल्स, ए, एक्स, बी. सब करो. टेल मी एक्स एंड ए के बीच में 1 कैपेसिटर इज डन, एंड ए एंड एक्स के बीच में 1 कैपेसिटर, सी सी, एंड एक्स एंड बी के बीच में 1 कैपेसिटर. सो 2 पैरेलल आने के बाद सीरीज. सो पैरेलल वाला इज 2c, 2c into cc, 2c square by 3c. So 2c by 3. So 2c by 3 is nothing but 2 by 3 epsilon naught a by d. Okay. Easy one. ऐसा पूछ नहीं है. Okay. ये और एक प्रॉब्लम करो. A plate this is, and this plate is called as B plate, and separated by distance d, all d. Find the C equivalent across A and B, and here says are connected.
कितना 3/5 epsilon not A by D. देखेंगे, आप लोग सब लोग बोलो। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करो, दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लेट का एक्स ले लो, ए भी एक्स आएगा, राइट। एक पे एक प्लेट का सभी पोटेंशियल आ गया, इधर पोटेंशियल नहीं है ना, वाई लगाओ, खत्म। 4 पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करो, ए बी लास्ट में, कैन टेक एनीथिंग, ए बी वाई, ए एक्स वाई बी। तो देखो एक्स एंड वाई के बीच में 1 कैपेसिटर, वाई एंड ए के बीच में, वाई एंड ए के बीच में 1 कैपेसिटर, एंड ए एंड एक्स के बीच में, ए एंड एक्स के बीच में 1 कैपेसिटर, एंड एक्स एंड बी बीच में, देखो एक्स एंड बी बीच में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इधर इंटरचेंज करेंगे, बिकॉज एक्स एंड बी का ड्रॉ करना नहीं आता ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई लगाएंगे, एक्स कर देंगे, चेक। एक्स एंड वाई के बीच में 1 कैपेसिटर, वाई एंड ए के बीच में 1 कैपेसिटर, एंड ए एंड एक्स के बीच में 1 कैपेसिटर, एंड एक्स एंड बी के बीच में 1 कैपेसिटर। नो फाइंड फर्स्ट सीरीज, देन पैरेलल, देन सीरीज। Three by five epsilon naught A by D. Yes, correct. Has he got a? Yes. So that is answer. 3/5 epsilon A by D is the answer. So what are the problem with the parallel plate capacitors का क्या problem है बोले तो, parallel plate capacitor में आपको we learn right, air field वाला, we are talking about air field वाला, both plate attract each other, दोनों प्लेट अट्रैक्ट विथ सम फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला भूल गया, ओके हाँ ठीक है, दोनों फोर्स से अट्रैक्ट होगा Q²/2A वो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एयर कैपेसिटर, ओके। दूसरा क्या है, नो मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लेट्स, सपोर्ट नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी आर एंटरिंग इनटू द कांसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक करने वाला है, उसमें दोनों प्लेट्स के बीच में वी आर पुटिंग सम मटेरियल, उसके वजह से अच्छा हुआ, उसके वजह से कैपेसिटेंस गॉट इंक्रीज्ड, कैपेसिटेंस वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। वो न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाला है।